process. Now, let's look into the major parts and components and basic working procedure. Here, we will learn how a vapor absorption refrigeration system works, along with its different parts and functions. So, let's get into the topic. The vapor absorption refrigeration system is almost similar to a vapor compression refrigeration system, but here we have replaced the compressor with an absorber. Hence, the name vapor absorption refrigeration is given to this system. In the vapor absorption refrigeration system we are discussing today, we will use ammonia water solution which will run throughout the system. So, we have ammonia, which is the refrigerant that gives the cooling effect or refrigeration effect. And there will be water, which acts as an absorbent. Water has a strong affinity towards ammonia, so the ammonia water solution is formed, and we will use this solution to run the vapor absorption refrigeration process. Now, let's look into the major parts and components and basic working procedure of vapor absorption refrigeration system. First of all, here we have an evaporator where the refrigeration effect or the cooling effect takes place. There is an absorber which contains the solution of ammonia and water. A pump is placed beside the absorber which is used to pump this ammonia water solution from the absorber to the generator. There is a generator with an analyzer fitted on the top of it, a pressure reducing valve, a condenser which converts the incoming vapor refrigerant into liquid by changing its phase, and finally over here, there is an expansion valve which expands the liquid refrigerant ammonia, decreases the pressure, and turns it into a cold chill low temperature low pressure liquid which will go to the evaporator. So, these major components together construct the vapor absorption refrigeration system. All these components are connected together with these connecting pipes. Now, let's start with the detailed function of the evaporator. Very cold, chilled, low temperature liquid ammonia coming out of the expansion valve enters into these evaporator coils through this connected pipe. We all know that the main cooling effect or refrigeration effect always occurs in the evaporator. So, when this low pressure, very cold, chilled, low temperature liquid ammonia will enter the evaporator coils, it will absorb all the heat present in the surface of the evaporator coils. By absorbing all the heat from the surrounding region of the evaporator coils, this cold chill liquid ammonia will turn into low pressure ammonia vapor inside these coils, and the surrounding surface of the evaporator will become cold by losing the heat to this liquid. Thus the cooling effect or refrigeration effect has occurred in the evaporator. After that, this low pressure ammonia vapor will leave the evaporator and enter the absorber through this connecting pipe. The absorber already has a weak solution of ammonia and water inside it, and when this low pressure ammonia vapor enters the absorber, the water present in the weak solution of this absorber will start absorbing this ammonia vapor, and the weak solution will gradually convert into a strong ammonia water solution. The more ammonia vapor coming from the evaporator is absorbed by water from this weak solution, the stronger this solution will become. But when water absorbs ammonia vapor, it also liberates heat. That is, when water will absorb the incoming ammonia vapor, it will produce heat which will increase the temperature of the solution. And when the solution becomes hot, gradually the capacity of water to absorb ammonia decreases. So, to keep the temperature of this solution to an optimal level, a supply of cool water is provided through this pipe so that this external supply of cool water through this pipe carries away heat from the solution, and thus water regains the capacity to continuously absorb incoming ammonia vapor. Beside this absorber, there is a pump. Now, when power is provided, then this pump starts working. Then using this pump, this strong solution of ammonia and water will be pumped from this absorber to this generator. So, the function of this pump is to transfer the solution from the absorber to the generator. We provide auxiliary heat or external heat to this generator, either by using steam, or hot water, or any heater, gas burner, etc. So, when the solution of ammonia and water reaches the generator, and heat is applied to this solution from the external source, both ammonia and water from this ammonia water solution turns into vapor inside this generator. Actually, ammonia turns into vapor faster than water, and water takes comparatively more time to completely turn into vapor, but eventually both ammonia and water will turn into vapor when heat is provided. Now, here we also have an analyzer on the top of this generator.
When this vapor of ammonia and water tries to pass through this analyzer, only ammonia is allowed to pass through. The analyzer continuously condenses the water vapor and sends water back to the generator. This is because if water vapor enters the system, it can decrease the efficiency of the refrigeration system, or if larger quantity of water vapor enters the system, then the system could be damaged. Thus, the analyzer separates water particles from ammonia vapor and only lets ammonia to pass through to the next components through this pipe for further process, and the analyzer sends water particles back to the generator. Then from this generator, the residue weak solution of water and ammonia accumulated here will be passed back to the absorber, again passing through this pressure reducing valve. So, here the high pressure, high temperature, pure ammonia vapor coming out of the generator will now enter into this condenser through this connected pipe. Here, we have a condenser. When high temperature, high pressure ammonia vapor enters this cold condenser, then the condenser absorbs the heat from the ammonia vapor and completely converts it into liquid. This condenser can be either water cooled or air cooled, or cooled by any other substance from an external source, which will liberate the latent heat of this vapor coming into the condenser, and thus condensing keeps happening. Now, here we have an expansion valve. After condensation, liquid ammonia will leave the condenser and pass through this expansion valve. Now, this high-pressure liquid ammonia, coming from the condenser, will be expanded inside this expansion valve. We know that when expansion occurs, the pressure between the molecules decreases considerably, thus the temperature falls. So, this high-pressure liquid ammonia will be expanded into low-pressure, low-temperature liquid ammonia. Thus, here we get very cold, chilled, low-temperature liquid ammonia coming out of the expansion valve. Then, this liquid ammonia will be again passed over to the evaporator through this connected pipe, whereby absorbing all the heat from the surrounding region of the evaporator coils. This cold chilled liquid ammonia will again turn into low pressure ammonia vapor inside these coils, and the surrounding region of the evaporator will become cold by losing the heat to this liquid. Then this low pressure ammonia vapor will leave the evaporator and enter the absorber through this connecting pipe, and the whole cycle will be repeated over and over again. Thus refrigeration or cooling will occur continuously in the evaporator region. So, this is how a vapor absorption refrigeration system works. Okay, so this was it. I will share the, sorry, not this, I will share. Okay, so this was it, vapor absorption refrigeration system. First of all, we would a bit talk about what is the difference, the basic difference between the vapor compressor and the vapor absorption. So here you are unable to find any compressor. There is no compressor at all. ठीक है, यहाँ पर कोई compressor नहीं होता है. Compressor के जगह पर यहाँ पर दो चीजें होती है, एक analyzer होता है और एक generator होता है. ठीक है, जो कि जनरेटर के अंदर ही है एनालाइजर, और एक एब्जॉर्बर होता है. सो देयर आर टू पार्ट्स, वन इज एब्जॉर्बर एंड अदर इज जनरेटर. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रेफ्रिजरेंट. तो रेफ्रिजरेंट जो है आपका कंप्रेशन, जो हमने पढ़ा था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसमें हम R12 या R22 यूज करते हैं, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. यहाँ पर हम अमोनिया यूज करते हैं, और यहाँ पर जो मेन फैक्टर है वो है आपका अमोनिया का बॉइलिंग टेम्परेचर. सो अमोनिया वेपर्स जो है वो बहुत ही कम टेम्परेचर में बन जाता है, दैट इज अराउंड 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, इसी चीज को हम यूज करते हैं. और जब हमें बल्क में रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करना होता है, इट इज मोर देन 5 टन टू थाउजेंड्स ऑफ टन, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ absorption रेफ्रिजरेशन सिस्टम. ठीक है, अब ये यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान देना है कि इवापोरेटर जो होता है, इवापोरेटर इज द थिंग, say for example this particular room, so this is the evaporator, इसे मैं ठंडा करना चाह रहा हूँ. ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने वाटर और अमोनिया को यूज किया है और कुछ नहीं किया है. ठीक है, यहाँ पर अमोनिया का क्वालिटी होता है कि वो अमोनिया जो है वो इवापोरेटर से निकलने के बाद वो वीक पड़ने लगता है. इसके लिए हम एब्जॉर्बर में हम क्या करते हैं कि वाटर और
NH3 का सॉल्यूशन पहले से रखते हैं। तो क्या करते हैं कि NH3 जो है, NH3 का जो आपका वेपर आ रहा है एब्जॉर्बर के अंदर, वो हीट प्रोवाइड करने लगता है, और हीट प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है कि उसका जो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी है वो घटने लगता है। इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हुए कि यहाँ पर जो है हम एक कूलिंग वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वीडियो में कूलिंग वाटर को अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब नहीं कर पाया, ठीक है। ये आप ये मत समझना कि कूल वाटर अंदर दे रहे हैं, कूल वाटर हम अंदर नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक पाइपलाइन है सर, जस्ट अ पाइपलाइन और अ सीरीज ऑफ पाइपलाइन, जिससे कि ठंडा पानी वहां से गुजर रहा है। तो उससे क्या होगा कि अंदर का जो सॉल्यूशन है वो जो गर्म हो रहा था उसके जगह वो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पर हम पानी मिक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर लेकर जाते हैं एनालाइजर में, और एनालाइजर में हम एक्सटर्नल हीट अप्लाई करते हैं, अलग से हीट अप्लाई करते हैं। अलग से हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है, हमारा जो अमोनिया जो है वो वेपराइज हो जाता है, और वेपराइज होते ही वो हम यहाँ से उसे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर अमोनिया विल गो टू द कंडेंसर, और जहां पर वो लो प्रेशर हाई प्रेशर it will turn into liquid, it will change its state. तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में यहाँ पर चेंज हो जाता है, और उसका ये एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व इस चीज के लिए यूज होता है। एक्सपेंशन वाल्व का सिर्फ छोटा सा काम है कि वो प्रेशर को कम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड अमोनिया आया था एक्सपेंशन वाल्व से, यहाँ पर लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड अमोनिया आता है, जो कि इवेपोरेटर के अंदर जाता है, और इवेपोरेटर में वो सक आउट करता है इंटरनल हीट को, जो भी इंटरनल हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसके बाद वो वेपर में चेंज होकर एब्जॉर्बर में चला जाता है। तो प्रोसेस सब कुछ सेम है, सिर्फ कंप्रेसर के जगह पर हम यहाँ पर एब्जॉर्बर और जनरेटर यूज कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो बल्क में जहां पर भी हमें रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करना होता है वहां पर हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज I hope you are able to see. Okay, so we are now talking about types of रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स यूज्ड इन होटल इंडस्ट्री। तो होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है वो हम पढ़ रहे हैं। सो फर्स्ट इज रिच इन यूनिट्स। रिच इन यूनिट्स, that's just a terminology which we would be discussing. नेक्स्ट इज काउंटर टॉप और टेबल और टॉप यूनिट, जो कि आप नॉर्मल होटल्स में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी देखते होंगे, जिसके ऊपर एक काउंटर टॉप होता है जिस पर कि आप वॉकआउट करते हैं, और नीचे जो है उसके अंदर रेफ्रिजरेशन यूनिट्स होते हैं। and are something called as walk-in units and special purpose unit. ये चार तरह के रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स जो है वो होटल के अंदर यूज होता है। We are discussing one by one. So first is your rich in units. ये कुछ नहीं होता है, ये जो आपके कूलर्स और फ्रीजर, इंडस्ट्रियल फ्रीजर्स होते हैं जो आप अपने किचन के अंदर आप अपने QTK, ATK और BTK के अंदर देख रहे हैं, उस फ्रीजर को हम रिच इन यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो टिपिकल रेफ्रिजरेशन कूलिंग टेम्परेचर जो हमें दिया जाता है वो हम बोलते हैं 4 to 7 डिग्री, however to be precise it is 4.4 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये कूलिंग टेम्परेचर है, ये यहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं है, हम फ्रीज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही हम फ्रीज करने की बात करते हैं दैट विल गो टिल -23 डिग्री सेंटीग्रेड। सो -15 से शुरू होता है और -23 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि आप के घर के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो रेफ्रिजरेटर होता है then there is a a cooling unit and then there is a freezer as well. तो यहाँ पर ये फ्रीजर का टेम्परेचर दिया गया है जिसे हम इन जनरल रिच इन यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अब ये काउंटर टॉप, ये एक टेबल होता है जिस पर आप काम कर सकते हैं, और नीचे कूलिंग यूनिट्स लगे रहते हैं जिसमें कि आप रेफ्रिजरेट करने के लिए आप जो भी फूड आइटम्स है, रॉ आइटम्स है, वो आप रख सकते हैं। आपके घर में भी जो भी यूनिट्स होंगे, जो भी आपके रेफ्रिजरेटर होंगे, यू बेटर नो दैट दे आर इन लीटर्स, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर मेरे पास 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, मेरे पास 280 लीटर का रेफ्रिजरेटर है, और उससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये उतना वॉल्यूम तो नहीं है। तो हाँ, ये वॉल्यूम की ही बातें हो रही है। हाउएवर अगर मैं 1 लीटर को डिफाइन करना चाहूँ, सो 1 लीटर ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब of taking out the heat from a particular volume। 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में से जो हम
जो हीट निकालते हैं उसे हम 1 लीटर बोलते हैं, 1 लीटर। ठीक है, तो आप उस अनुसार समझ सकते हैं कि 165 लीटर या जितना भी है। ये जो सबसे छोटा यूनिट यहाँ पर आता है होटल के अंदर वो 100 लीटर्स का आता है। ठीक है, एसी में हम टन में बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब इसके बाद आता है वॉक इन यूनिट। वॉक इन यूनिट जिसे हम वॉक इन बोलते हैं, नाम ही है वॉक इन। सो वॉक इन मींस दैट यू कैन गेट इनटू दैट, आप उसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ रूम। ठीक है, तो अब ये वॉक इन यूनिट के अंदर दोनों तरह के यूनिट हो सकते हैं। दे कैन बी रिचिल, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 4 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी हो सकता है, और उसके अंदर एक और डोर होगा जिसके अंदर तुम जाओगे एंड यू विल फाइंड अ फ्रीजर जो कि -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इसके लिए आपको once you will go for your industrial training you will find hotels are having walk in। ठीक है, वॉक इन चिलर बोलते हैं उसे। तो इसके अंदर चिलिंग यूनिट्स भी होता है, रूम के अंदर आपके एक और कमरा होगा जिसके अंदर आप जाओगे और एक अलग टेम्परेचर होगा। देन यू हैव टू यूज ग्लव्स एंड यू हैव टू wear a overcoat and then only you can enter, जहां पर कि अलग अलग सामान रखे होंगे, पोल्ट्री रखा होगा एंड देयर वुड बी वेजिटेबल्स, देयर माइट बी पेरिसेबल इन द कूलिंग यूनिट। ठीक है, इसे हम वॉक इन यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर एक टिपिकल साइज दिया गया है 4x5x3 मीटर्स, उससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और ये कस्टम बिल्ड होता है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरह के मिलेंगे। ये कस्टम बिल्ड को ही हमने यहाँ पर स्पेशल पर्पस में दिखाया है। जैसे आप आइसक्रीम के फैक्ट्रीज में जाओगे तो यू विल फाइंड दिस, या फिर आप जो ट्रक्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, दे आर आल्सो स्पेशल पर्पस यूनिट। आपने देखा होगा कि फ्रीजिंग यूनिट्स होते हैं ट्रक्स के अंदर भी। ठीक है, सो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है दे आर यूजुअली -18 टू -23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ही एक छोटा सा चीज आ जाता है जिसे हम बोलते हैं वेट फिश कैबिनेट। इसका टेम्परेचर इज मोर देन दिस आइसक्रीम यूनिट, क्योंकि इसे हम, इसमें क्या होता है कि गैल्वेनाइज्ड ड्रॉवर्स होते हैं, जिस तरह से आपके टेबल के अंदर ड्रॉवर्स होते हैं ना, उसके अनुसार उसी जैसा गैल्वेनाइज्ड आयरन के ड्रॉवर्स होते हैं, उसमें हम पानी भरते हैं और पानी भरकर चिल्ड वाटर, ठीक है, और उसके साथ हम इन फिश को रखा करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश व्हिच आर बीइंग स्टोर्ड। ठीक है, तो इस 4 तरह के यूनिट्स जो है रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स होटल्स के अंदर आपको मिलेंगे। द मोस्ट कॉमन इज वॉक इन। वॉक इन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, वॉक इन कैसा होगा, एक रूम होगा, उसमें टेम्परेचर होगा, द टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड बाहरी टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, यूनिट होता है जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सो वी आर हैविंग अराउंड 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट डिपेंड्स अपॉन होटल टू होटल। ठीक है, तो 0 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। जब रूम के अंदर जाओगे उसके अंदर एक और यूनिट होगा, एक और रूम होगा, वो जो है वो फ्रीजर होगा। दैट वुड बी -18 -16 -20 अप टू -23 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर रखते हैं, और वहां पर ही सारा कुछ स्टोर होता है हमारा। ठीक है, अब ये है आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो अभी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, जिसे हम टन के रूप में जानते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि टन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मींस कूलिंग इफेक्ट ऑफ 50 किलो कैलोरी पर मिनट। इन अदर वर्ड्स 3000 किलो कैलोरी पर आवर। ठीक है, ये आपका बेसिक यूनिट है रेफ्रिजरेशन का। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू कन्वर्ट इट, वो कन्वर्ट करने के चक्कर में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, आई एम एबल टू सी रविंद्र ट्राइंग टू कन्वर्ट इट, मल्टीप्लाई इट। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास, नॉट नाउ, वी विल बी स्टडीइंग एयर कंडीशन एंड इट्स टाइप्स। ये आपने नाम सुना भी होगा। सो दैट इज विंडो एयर कंडीशन, विंडो एसी, स्प्लिट एसी एंड सेंट्रलाइज्ड एसी। ये तीनों की जिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे काम करता है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट। ठीक है, दैट इज VARS और VACS। ठीक है, so that's all for today for this particular subject. If you do have any doubt, you can ask me right now. Thank you.